हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने फाइल के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखा। मैंने देखा कि फाइल को हम ओपन किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से हमने फाइल ऑब्जेक्ट रेफरेंस को यूज करके उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी देखा कि फाइल की प्रॉपर्टीज क्या है, फाइल मोड क्या है उसका, वो रीडेबल है या राइटेबल है, किस तरीके से है ना। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अब इस वीडियो में जो है हम फाइल के साथ जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हैं जिसको हम रीड और राइट ऑपरेशंस बोलते हैं वो देखेंगे। साथ में इसकी कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे किस तरीके से आप एक फाइल के साथ हैंडलिंग कर सकते हैं, है ना। सो लेट वी टेक इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट टू राइट द डेटा ओवर द फाइल। हाउ राइट डेटा फाइल पर हम डेटा किस तरीके से लिखें, है ना। सो देयर आर टू वेज टू राइट फाइल। One is write method. Second one is write line method. Write lines method, not write line. So how to use it? First of all, we have to open the file in the writing mode. तो किस तरीके से मैंने आपको बताया था, we will open the file. The file name is the rahul.txt and we are opening it into the writing mode. To write a data in a file in a Python by object reference f, we can call one method, that is a write method. And we will write here Rahul, and suppose here I am writing f dot write. When I run this code, so, and open this file rahul.txt, should be the writing mode. Rahul.txt file is there. And read write the data and run this code. So data returned successfully. The file should be closed here. Yes. So you can see the file was not closed. That was the reason it was not performing the write, because it was assuming कि वो कहीं exclusive mode में तो नहीं है। तो जब हमने उसको राहुल डॉट टीएक्सटी फाइल को ओपन किया, राइटिंग मोड में ओपन किया, व्हेन आई राइट द राहुल एंड दुबे, सो कैन यू सी दिस कंटिन्यूअस टू राइट ओवर दिस फाइल इज नॉट सेपरेटेड बाय एनीथिंग, है ना। सो व्हाट आई नीड टू डू व्हेनेवर आई एम राइटिंग समथिंग हियर एंड इफ आई राइट हियर अ स्लैश एन, व्हेन आई रन दिस कोड अगेन, check for the file, can you see it's a next line. So the new line character is important here. Whenever we are writing by using the write method, तभी हमारा जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से लिखाएगा। What is our responsibility after this as per the previous video discussion? हमें इस फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा उसको लिखने के बाद, है ना। सो व्हेन आई रन दिस कोड अगेन, बट कैन यू सी दिस, एवरीथिंग इज ओवर रिटन ओवर दैट। हम मैं जितनी बार राहुल दुबे लिख रहा हूँ वो स्टार्टिंग से ही आपको लेके राहुल दुबे लिख रहा है ना। सो दिस इज व्हाट द मेथड टू राइट अ डेटा ऑन अ फाइल। तो ये सिंपल एक राइट मेथड है। बट व्हाट इज हैपनिंग, मैं डेटा लिस्ट के फॉर्म में, इफ आई एम हैविंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट, सपोज आई एम हैविंग वन लिस्ट हियर, here is the Rahul slash n. Now here Dubey slash n. Here is Vasu
slash, and I want to write this data of the list. So then you cannot use write function. आप write function का यूज नहीं कर सकते. तो सेकंड मेथडोलॉजी बताई है आपको मैंने, दैट इज द राइट लाइन फंक्शन, राइट लाइंस फंक्शन, है ना. उस राइट लाइंस फंक्शन में मैं अपना कंटेनर पास करूंगा, and I have to take these two functions here, that is app.close. Okay, so what is this error? I operation on closed file. Okay, fine. This file is closed here, that is what the reason कि वो closed file पर बोल रहा है यहाँ पर. हमें इस कोड को यहाँ रन करना पड़ेगा. Now you can see this, the data has been, क्योंकि देखिए हमने जो फाइल ओपन करी थी ना उस सेल में, वो यहीं पर ओपन हो गई थी, वहां पर हमने क्लोज भी कर दिया था उसको. Now you can see this, and when I run this, yes. So can you see this? Rahul Dubey, Vasu. Okay. So we over the same file, what is happening here? हम दो बार सेम चीज लिख रहे हैं. If I take this code here, it's very important during the dealing with the file. Every line is having the importance here. So when I do this and open this file again, can you see this is containing the Rahul Dubey and Vasu? So by using write line method, I have written a multiple lines at the same time, and by using the write method, हमने क्या करा था, केवल एक सिंगल लाइन को लिखा था. ठीक है. अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि भाई ठीक है, हमने जो टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा लिखा, या मतलब इस डेटा को हमने जो फाइल पर लिखा है, उस डेटा को हमने एक पर्टिकुलर टेक्स्ट फॉर्म में लिया. लेकिन यदि मान लीजिए मेरा कोई डेटा है जो इट्स अ टाइप ऑफ डेटा टाइप ऑफ पाइथन, लाइक मैं लेता हूँ यहाँ पर एक डेटा, एक डिक्शनरी बनाता हूँ यहाँ पर मैं, दैट इज कंटेनिंग, सपोज दिस शुड बी DIC, and it is containing one name. Suppose this name is Rahul. Is containing the marks. LM. Marks of all subjects. Like मैं इसमें लिखता हूँ 1 2 3 4 5. What I want to do? I want to store this data in my file. I want to store this data in my file, and that data, यदि मैं इस डेटा को डायरेक्टली लिखता हूँ, सपोज है ना, मैं इसमें एक फाइल ओपन करता हूँ यहाँ पर, एंड सपोज आई एम क्रिएटिंग वन मोर फाइल. Suppose this is the rahul1.txt, and simply I write f.write, and I'm passing the dict. And I pass the dict, and then I close the file, and I run this code. So can you see this? Okay, here should be WRIT. Okay. Write argument must be string, not dict. So can you see there? यदि मैं इस पाइथन के ऑब्जेक्ट को, डिक्ट ऑब्जेक्ट को, यदि मैं डायरेक्टली फाइल में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो इट इज गिविंग यू द एरर दैट इट शुड बी स्ट्रिंग, इट शुड नॉट बी डिक्ट, है ना. सो व्हाट कैन बी द पॉसिबल वे? आई एम कन्वर्टिंग इनटू द str, then executing the code. Can you see the output is here in the rahul1.txt? You can see the complete data is here, है ना. बट हियर इज वन लिमिटेशन कि ये जो चीज है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन आप इसको फिर से रिवर्ट बैक करके, इफ यू वांट द सेम थिंग इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड यू वांट टू परफॉर्म द इवेल्युएशन, मतलब आप इवेल करके इसको रीड करने की कोशिश करेंगे, दैट मे बी द प्रॉब्लम टू यू. सो इट इज बेटर टू यूज इंस्टीड ऑफ strrepr फंक्शन हमें यूज करना है. ये क्या करेगा? आपके ऑब्जेक्ट को इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग करके ये फाइल पर लिख देगा, and this file will have the data. और जब भी आप इस डेटा को यूज करना चाहेंगे, whenever you will be requiring to read this data, आप उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ले सकते हैं, है ना. तो अब देखिए, रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. सो
to read. This is all about the writing, है ना? So we have used the write method and the write line method here. Now I'm talking about the read method. Read on file, reading from file. ठीक है? Just a minute. अब यदि मैं इस फाइल से रीडिंग करना चाहता हूँ, है ना? तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? So my Rahul one file is containing what data? Let me see here. Okay, it is containing three data, and this is Rahul one txt is containing this dictionary here, and we want to perform the reading from the file. तो फाइल से रीड करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड दी गई हैं जिस तरीके से राइट करने की मेथड है. तो फर्स्ट मेथड इज राइट मेथड, रीड मेथड, simple read method. It will read the complete data from the file. Complete data from file. Second method is read in bracket n. So this method will read n characters. Now we are having the read line method. This method will read in from file. ये क्या करेगी? इंडिविजुअल लाइन को रीड करेगी फाइल से. Now we are having another method that the read lines. Read lines method क्या करेगी? It should be function. It should be very clear to everyone. And only read lines method भी क्या करेगी? It will read the complete data in the form of lines, and store it into a list. It means it will read the data in the form of the list. What does it mean exactly? Let me check it. यदि मैं let I open the rahul.txt file. F is equal to open in bracket rahul.txt. Now my mode should be uh, R, read mode. अब यदि मैं आपसे बोलता हूं कि print, suppose I read the data is equal to f dot read. मैंने सारा का सारा complete data ले लिया. When I print the data in front of you, can you see the whole data is available there? But what I want instead of this complete data, I want the data line by line. So instead of this, what I will do, I will read data is equal to f dot read line. Then I print data. Okay. Here is one important thing. New point is coming in the picture. That is, what is the importance of seek and tell method? What is the importance of tell method? अब एक बात ध्यान से देखिए आप लोग. मैंने इस कोड को रन करा. जैसे ये एफ डॉट रीड करने के बाद आई एम रनिंग दिस कोड रीड लाइन. अब देखिए, आई एम नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एरर. अब इस एरर के ना होने के बावजूद भी हमारे पास हमारी फाइल का आउटपुट नहीं आ रहा है. जबकि आप देख सकते हैं कि फाइल में कहीं ना कहीं क्या लिखा हुआ है? राहुल दुबे वासु. इट शुड बी डिस्प्लेड एटलीस्ट वन लाइन. राहुल शुड बी डिस्प्लेड एज पर द कोड. बट व्हाट इज हैपनिंग? यदि मैं यहाँ पर पोजीशन देखता हूँ मेरे कर्सर की, if I ask for the position of my cursor, that is a f dot tell, when I run this code, so can you see it's having the 22 position. इसका मतलब क्या है? इसमें देखिए आप 5 5 5 6 and 5 here. So you can see after this the spaces and something else read lines here. The position of the cursor is somewhere else. But to read this data, इस डेटा को पढ़ने के लिए हमें यदि पहली लाइन पढ़ना थी तो हमारा कर्सर कहाँ होना चाहिए था? It should be on the initial position. If I do the seek and run this code, तो seek पे हमारी position क्या आ जाती है? 0 position आ जाती है. Then I do data is equal to f dot read line. When I print a data,
Can you see the output, Rahul? So the seek is basically the method जिससे आप अपने पॉइंटर को एक पर्टिकुलर पोजीशन पर सेट कर सकते हैं, है ना? और टेल वो मेथड है जो आपको बताएगी कि एक्चुअली आपका फाइल का पॉइंटर पॉइंटर कहाँ पर है। क्योंकि देखिए, उस सिचुएशन में जब फाइल आपका एंड पर था पॉइंटर, जो कंप्लीट डेटा के एंड पर था, आपने देखा था वी वर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एरर। लेकिन कहीं न कहीं हमारा फाइल का जो आउटपुट है वो आ नहीं रहा था, है ना? सो बाय बाय दिस आई एम हैविंग दिस रीड लाइन मेथड। एक और मेथड है जो मैंने आपको दिखाया, दैट इज रीड लाइंस, है ना? तो मैं यदि इस कंप्लीट डेटा को रीड करना चाहता हूँ, आई वांट टू रीड दिस कंप्लीट डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल लाइंस, और उस डेटा को मैं यूज करना चाहता हूँ, सो व्हाट आई नीड टू डू, डेटा इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लाइंस। व्हेन आई प्रिंट द टाइप ऑफ डेटा, यदि मैं डेटा का टाइप प्रिंट करता हूँ, तो यू कैन सी दिस इज अ लिस्ट, एंड देन फॉर आई इन डेटा, फॉर द इंडिविजुअल डेटा, इफ आई वांट टू प्रिंट आई, यानी सी सारा का सारा लिस्ट का जो डेटा है एक एक करके आपके पास आ गया। सो यू कैन सी राहुल दुबे एंड वासु। This is what the difference between the read line, and this is what the difference between the read, and third one is the complete read method only and read line only, है ना? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखिए, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता था। आपने देखा था कि राहुल 1.txt फाइल हमने यहाँ पर ली हुई थी एक। सो लेट मी टेक दिस फाइल अगेन। This is what the file here. इस राहुल 1.txt फाइल में हमने डिक्शनरी रखी हुई थी, ठीक है? एट हमने जो राइट करा था, इसको रिप्रेजेंट फंक्शन के थ्रू राइट करा था। अब इंस्टीड ऑफ राइट, व्हाट आई वांट टू डू, मैं इसको रीड करना चाहता हूँ, और इस डेटा को मैं रीड मेथड के थ्रू कॉल करूंगा, और यहाँ पर मैं डेटा लूंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हियर, मैंने इस डेटा को रीड करा। रीड करने के बाद जब मैं इसको क्लोज करता हूं, एंड व्हेन आई बिफोर दैट आई प्रिंट द डेटा, प्रिंट डेटा and run this code. So can you see this? The data is there, but what is the important thing here? When I print the type of this data and run this code, can you see this is the string? But what I want here, एग्जैक्टली मैं चाहता हूं कि ये मेरा जो डेटा है वो उसी फॉर्म में आ जाए जिस फॉर्म में हम उसको यूज कर सके, है ना? सो सपोज आई वांट टू कन्वर्ट दिस डेटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, तो मैं क्या बोलूंगा, डिक्ट डेटा is equal to eval, and it should be the data here, and before file I want to print क्या डेटा था डिक्शनरी में हमने जो दिया था, सपोज आई वांट टू प्रिंट di dict data in bracket name. When I run this code, here is a name error, dict data, it should be data, not dict, date only. So can you see that Rahul is here? And if you will check for the type of dict data instead of this data, um, dict data. Okay. When I run this code, can you see this the dict only, and the previously it was a string. So this is what the advantage of the REPR function over the string. यदि मैं string के ही थ्रू लिख रहा होता उसको, तो मैं उस डेटा को eval के थ्रू नहीं रीड कर पा रहा था ना पर्टिकुलर फॉर्मेट में। बट यदि मैंने आपको REPR का यूज करा है, सो इट गिव यू द फंक्शनैलिटी टू रीड योर डेटा इन द फॉर्म द ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर फाइल, है ना? तो हमने उसी फॉर्म में उस डेटा को अपने पास वापस ले लिया। So this was all about the read method, read n method, read line method, and read lines method. Now here is one important point. Suppose I'm having one more concept here before moving for that program.
दैट इज विद स्टेटमेंट। विद स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अब देखिए, अभी तक आपने जो फाइल ली है या फाइल जिस भी फाइल पर काम किया है ना? उस फाइल में इट इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द प्रोग्रामर कि वो उस फाइल को ले और उस फाइल को वो क्लोज़ करे। बट व्हाट आई वांट कि जब भी वो फाइल ओपन कर रहा है, कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी उसको मिल जाए कि उसको खुद से फाइल क्लोज़ ना करना पड़े। बट व्हेन दैट ब्लॉक विल व्हेन द कोड एग्जीक्यूशन विल बी आउटसाइड दैट ब्लॉक, वो अपने आप क्लोज़ मिलेगा हमें, और व्हेन वी विल चेक फॉर द प्रॉपर्टी इट शुड बी द फाइल शुड बी क्लोज्ड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी विल ओपन द फाइल विद, एंड हियर वी हैव टू यूज़ द विद ओपन, और इस फाइल का नाम क्या है हमारा? सपोज दैट इज अ राहुल डॉट टीएक्सटी, एंड इन विच मोड सपोज वी आर यूटिलाइजिंग इट? सपोज वी आर यूजिंग इट इन द राइट मोड, है ना? और इसको कैसे करना पड़ेगा? ओपन है इसका ऑब्जेक्ट, तो हमें एफ ही लेना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्ट में हम एफ में हम काम करेंगे। एंड व्हाट आई एम डूइंग, जस्ट सिंपली आई एम राइटिंग राइट द एप्लीकेशन ऑफ विद। Now, here one important thing. When I print for the status of file dot close. Now here I take this code. When I will be outside the block, when I run this code, okay, here is the indentation error. When I run this code, so can you see this? Print status, the close method should be there, I think. It's not a close, it's a closed, because we are checking for the status. When I run this code here, you can see the output. The status of file is equal to false, and now the status of file is a true। मतलब पहले फाइल क्लोज नहीं थी और अब फाइल क्लोज हो चुकी है जैसे ही वो विद ब्लॉक के बाहर निकली है ना? नाउ वी क्रिएट वन real time problem here, and we will check that how to use the with open, write and read इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना? सपोज मेरे पास एक डेटा है, द डेटा इज ऑफ एम्प्लॉय। सपोज वी आर हैविंग वन एम्प्लॉय डेटा फाइल, और उस एम्प्लॉय डेटा फाइल में मैं सारा का सारा डेटा यूजर से ले रहा हूँ, एंड आई वांट टू स्टोर दैट डेटा इनसाइड माय फाइल। तो वो किस तरीके से करूंगा मैं, है ना? सो टेक एम्प्लॉय डेटा फ्रॉम यूजर एंड स्टोर इट फाइल, एंड ऑल्सो परफॉर्म रीडिंग ऑफ डेटा। अब यदि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा? टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हम लेते हैं, एक फाइल बनाते हैं विद, ओपन करता हूं मैं इसको, एंड फाइल का नाम देता हूं मैं emp.txt, और इस फाइल को मैं राइटिंग मोड में लूंगा। और व्हाट आई नीड टू डू दिस एज एफ ब्लॉक बनेगा हमारा, इस ब्लॉक के अंदर हम कोड लिखेंगे। सो इनिशियली सिंपली आई एम राइटिंग f.write-lines, इनिशियल हेडर देंगे उसका, और उस हेडर में जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, सपोज वो हम किस में फॉर्म करेंगे? लिस्ट के फॉर्म में पास करेंगे। तो सपोज दैट इज e number, employee number, we will give the slash tab here, then we will store e name slash tab here, now we will store e salary। These are the three data which we will store। तो हमने एक फाइल बनाई और उसके अंदर हमने डेटा स्टोर करने की कोशिश करी। वी हैव टू राइट वन स्टेटमेंट हियर, दैट इज क्या करना पड़ेगा? इसके बाद हम एक स्पेस देना चाहते हैं, एक लाइन का, न्यू लाइन से हम न्यू लाइन के बाद उस डेटा को कंप्लीटली राइट करना चाहते हैं। सो आई हैव गिवन द राइट स्लैश एन। नाउ आई एम टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर कि इनपुट दीजिए आप द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स।
इस नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को लेने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज ऑफ, जितने भी यूजर ने एन दिया हुआ है नंबर ऑफ एन तक हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दैट ई नंबर इज इक्वल टू इनपुट एंटर एम्प्लॉय नंबर, देन ई नेम is equal to input, enter e name, third one is salary, e cell is equal to input, enter the employee salary. Now what is important here, यदि मेरे पास e name number था, so I can take it as per the requirement, कि मैं इसको ई नंबर के फॉर्म में लूं या स्ट्रिंग के फॉर्म में लूं, लेट आई टेक इट इन द फॉर्म द स्ट्रिंग फॉर द सिंपलिसिटी। अब मुझे क्या करना है, जितनी बार ये डेटा आए इस डेटा को मुझे लिख देना है ना। सो आई एम टेकिंग दिस राइट लाइंस कोड। इस राइट लाइन में मैं क्या पास कर रहा हूँ, आई एम फर्स्टली पासिंग द ई नंबर, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, मैंने सारा डेटा जो है स्लैश टी पर मेंटेन करके चला है कि मैं स्लैश टी लूंगा उसके बाद करूंगा। नाउ सिमिलरली फॉर ई नेम, सॉरी इट शुड बी क्लोज फर्स्ट। नाउ ई नेम प्लस स्लैश टी, नाउ ई सैलरी plus in bracket slash t is here. So this is what the f right line we are doing, and after this every code, just a minute, it should be the list here close first, it should be closed. Now app dot write, न्यू लाइन में उसको हर बार चेंज करेंगे। So this is app dot write, now this is what the code, now simply I print after exiting from here, data return successfully. Let I run this code, and I'm asking for the two records of the employee. One, Rahul, employee salary, suppose 5555. Employee number two, Vasu, 1256789. Now can you see the data is written successfully? So let me check for our employee.txt file. So can you see this? It was a tab separated employee number, employee name, employee salary, and at for the same space we are having this data. तो हम एक टैब सेपरेटेड डेटा जो है कंप्लीटली इस कोड के थ्रू मेंटेन अपने पास कर पाए, ठीक है। अब नाउ नाउ व्हाट इज आवर गोल फॉर दिस फाइल, व्हाट एवर द डेटा इज रिटर्न, आई ऑल्सो वांट टू प्रोवाइड वन कोड विच विल रीड ऑल द डेटा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल ऊपर क्लोज हो गई है, नाउ इन विच मोड आई हैव टू ओपन दिस फाइल, विद ओपन। ओपन मोड में मुझे क्या करना है, कौन सी फाइल है हमारी, emp.txt, please open in the read mode as f. Now what I will do, simply what I need to do, lines is equal to f.read lines, अभी पढ़ा हमने कोड, इसको हम यूज करेंगे। and what I will do for every, for I, this should not be the colon here, for every I in lines, लाइंस के अंदर जो भी हमारा डेटा है उस डेटा के लिए हम व्हाट वी विल डू, प्रिंट आई। सो व्हेन आई रन दिस कोड, कैन यू सी द होल डेटा, सारा का सारा डेटा जो है हमारे पास, क्योंकि हमने स्लैश एन दिया हुआ था यहाँ पर, इसलिए उस फॉर्मेट में आ रहा है। लेट आई डू दिस लाइक दिस, रन दिस कोड, वन राहुल
चलिए ठीक है, हमने कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिया वहाँ पर, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, सो डेटा इज रिटन सक्सेसफुली। व्हेन आई चेक फॉर दिस डेटा, you can see here the data. When I run this code here, so you can see this data, है ना? क्योंकि हमने यहाँ पर एक लेसन दिया हुआ था आपको ये रीड करने के लिए, जिससे आप नीचे का पूरा पूरा डेटा प्रॉपर्ली रीड कर सकें। सो दैट इज व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ द फाइल हैंडलिंग, जहाँ पर हमने डेटा को एक्सेस करा और राइट करा, और उसके बाद हमने उस डेटा को रीड करा, और रीड करने के बाद हमने उसको अपनी एप्लीकेशन में यूज करना सीखा। सपोज I want to create one more program here that is very important for us. कि for every what we have to do, I want to replace something in a file. Suppose मैं एक डेटा लेता हूँ, डेटा रिप्लेसमेंट। I will do, मैं एक डेटा लेता हूँ, सपोज आई एम सिंपली लेकिंग टेकिंग अ डायरेक्ट कोड here. Following students went to RGPB, GPB, just lesson here, enjoying Python with Rahul sir. This is what my code. Just take one file in a open mode. I will open the file here, and simply I will take the name of file rahul2.txt. Then what I will do, I will take write mode here. In the write mode, dot write, simply I write the data. It should not, because we are not using the, so simply I am writing here. Passing this data inside this. So this data will be written in the file. Now what I want to replace the data that has been written. Suppose I run this code, and when you check for this file, that is a rahul2.txt, okay, this should be the rahul2.txt. Like, just a minute. Okay, it is requiring for the closer that we have discussed, app.write and app.close. When I open this code, rahul2.txt, okay, so you can see this. Following students went to the RGPV and enjoying Python with Rahul sir. है ना? Now, what is my task here? Suppose I want to replace this RGPV from SATI, Samrat Asok Technological Institute SATI, for example. So what I will do, I simply take this code with open. Now it is very important to see. I'm going to discuss another mode, that is rahul2.txt. इसमें जो नया मोड हमें लेना पड़ेगा वो रीड प्लस मोड है हमारा। कौन सा मोड है? आर प्लस मोड है, क्योंकि मैं रीड करूंगा और उस रीड के बाद उसके ऊपर राइट करूंगा, है ना? सो व्हाट इज द मोड इज हियर एज एफ, दिस इज द आर प्लस मोड, है ना? सो दिस इज व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ द आर प्लस मोड। अब मुझे क्या करना है? फॉर आई इन एफ, नाउ लिसन वेरी केयरफुली एवरीवन हियर। यहाँ पर जो एफ है, एफ वही काम कर रहा है मेरा जो एफ डॉट रीड लाइन्स ने हमारे लिए किया हुआ है ना? तो एफ से इस तरीके से भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं एक लिस्ट लेकर चलता हूँ ओपन मेंटेन करके, दैट इज आवर ब्लैंक लिस्ट। व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द इंडिविजुअल लाइन, एंड इन द एल आई विल अपेंड द वैल्यू ऑफ एस टी आर। आई में जो भी लिखा होगा मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा, and by this I can use the replace method, and for this replace method I want to change the RGPV, that is SATI, should be closed before performing these activities, okay?
And what I want to do, I want to write a SATI, and this should be append only. And third is there, that is stri dot replace SATI. Okay, this is fine now. String I dot replace method, it's working fine. There is something missing, I think. Okay, that's the problem here. Now it's working fine. हम इसको replace करेंगे. What I will do, finally app dot seek, हमने जो काम किया है पूरी उसको रीड कर लिया है, हम 0th पोजीशन पर आएंगे. And finally what I will do, I will perform the app dot write lines, and in this write lines I will pass L, and finally I will print data changed successfully. And I run this code and now check for a minute. Yeah, Rahul txt dot. Okay. So can you see this? Following student went to SATI and enjoying Python with Rahul sir. So this RGBB has been replaced by the SATI. So that is what the application of R plus mode when we are trying to replace some data in a file. इसी तरीके से आप अदर मोड्स का भी यूज कर सकते हैं, है ना? सो फॉर दिस वीडियो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.